जय श्री राम। इस वीडियो में मैंने दुर्गा सप्तशती के दिव्य कवचम इस अध्याय का पाठ किया है। ओम अथ दिव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासो तमातरौ बीजं दिव्यं देवतास्तवं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जय विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। श्री मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्य परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यः कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्य महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् सुवेरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येषु भक्त्या स्मृतं नूनं ते समृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यते रथमारूढा दिव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदाशक्तिं हलेचमचलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुपाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्गमायुधमुत्ततं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीक्तं देवानां च हिताय वै। नमेस्तुस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामरिमग्निदेवता दक्षिणे वतु भारायि नैऋत्या खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणे रक्षेत् वायव्या मृगवाहिनी उदीच्या पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एव दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा सर्ववाहना जया मे चाग्रतं पातु विजया पातु पृष्ठतः आजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रूर्रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके
संखिनी चक्षुयोर्मध्ये स्रोतयोद्वारवासिनी कपोलो कारिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चन्द्रघण्टा च महामाया च तारुके कामाक्षी चिबुकीं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठदंसे धनुर्धरी नीलग्रीवा मयूरकण्ठे नलिकां नलकूवरी स्कन्धयोः खड्गिनो रक्षेत् वायुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाचूडेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणा नाभौ च कामिका रक्षेत् गुह्यं गुहे विस्सरी तथा पूतना कामिके मेढं गुदे महिषवासिनीं कट्यां भगवतीं रक्षेन् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महावले रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु च श्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखां दृष्टा कराली च केशां स्ववर्धिर्केसनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्ता मञ्जावसा मांसान् यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणिकालरात्रिं च पित्तं च मुकटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणिने मे रक्षेन् छाया छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा ध्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेन् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च सत्ते स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमेश्चैव रक्षेन्नारायणी तदा सदा आयुरक्षेन्वाराही धर्मरक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रणीं गोत्रमित्राणि मे रक्षेन् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्धितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवीं जयतीं पापनाशिनीं पदमेकं च गच्छन्तु यदीक्षेश्चु माममात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरैव मतुलं प्राप्यसे भूतले पुमान् निर्भयो जायतं मृत्युः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतं पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं समुद्रवान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याघ्राः सर्वे लौताविस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मत्रयन्त्राणि भूतवे भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाश्च भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदयसंकृते मानोन्नति भवेद्राज्यै तेजोवृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेन् सप्तशतीं चण्डीं गृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमस्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषं नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ अथ श्रीदेव्या कवचं सम्पूर्णं श्रीदुर्गायै नमो नमः।